Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So friends, today we are going to discuss a topic based on cyber crimes. So as we know, nowadays we are facing a big issue with the cyber crime. So here is the history of cyber crime. The first recorded cyber crime took place in the year 1820. That is not surprising considering the fact that the abacus, which is thought to be the earliest form of a computer, which has already earlier invented around since 3500 BC ago. So nowadays, due to cybercrime, we are facing different cyber threats in sectors most vulnerable to cyber threats like critical infrastructure, financial sector, health sector, and telecommunication. So these four sectors are there which are mostly affected. Now let us clear the meaning of cybercrime first. Cybercrime refers to the illegal activities carried out using computers on the internet, and its importance lies in the growing threat it poses to individuals, businesses, and national security. So definition of cybercrime simply we can define. Cybercrime is any unlawful act where a computer, communication device, or network is used to commit or facilitate a crime. So am I audible to all of you, friends? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Audible. So cybercrime mostly includes hacking of a data, like unauthorized access to systems or from the data. Sometimes we are mostly victimized of phishing. In phishing, on websites to steal sensitive information from the personals or from the any organization. Identity theft. So here, stealing personal data for fraudulent cases. Malware attacks is one of the most of the example of cybercrime, using viruses, ransomwares, or Trojan horse to damage or stealing the data. And cyberbullying and cyber stalking. So it is a case of harassment via digital platforms. So in today's world of internet and computer networks, a criminal activity can be carried out across national borders with false sense of anonymity. In this situation, mostly hackers or the attackers would look to exploit vulnerabilities in the network such as inadequate border protection, border as in the sense of network periphery, remote access, just like from servers or with the weak access control. Third, application servers with well-known exploits. And fourth, misconfigured systems and systems with default configurations. तो जनरली हैकर्स क्या करते हैं कि नेटवर्क का यूज करके या रिमोट सर्वर्स का एक्सेस करके उसको पर्टिकुलर सर्विसेज को ब्लॉक करके हमारा डेटा हैक करते हैं एंड of cyber crimes can be categorized based on the following. The first is the target of the crime, and the second is whether the crime occurs as a single event or as a series of events. So generally, Excuse me, your slides are not moving. It is not in slideshow mode. Is it not visible, ma'am? It is visible, but we are on the same title slide, sir. Kindly make it slideshow. Now, is it visible now? No, sir. It is still in PPT mode only. Okay, which PPT you are seeing right now? First one? Friends, can you see the slideshow? Please post. Yes, ma'am. No, Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Slideshow. Slide Display here. Sir, till now we can see only your title slide. आता तुम्ही चेंज करताय तर हिस्ट्री ऑफ सायबर क्राईम दिसते आहे पण स्लाइड शो मोड मध्ये नाही आहे सर. बरं मॅडम मी पुन्हा एकदा कर. आता दिसतंय का? विजिबल आहे पण स्लाइड मोड नाही आहे सर. Just click on F5, sir. F5.
F5 फंक्शन की प्रेस करून बघा सर कीबोर्ड वरून. Yes. Now is it working now? सर Is it स्लाइड visible now? दिसत आहे परंतु हा. ती कसं विजिबल म्हणजे स्लाइड शो मध्ये दिसत नाही आहे. कीबोर्डवर Okay. F5 बटन असेल सर बघा. नाही त्याने पण होत नाही आय नाही, थिंक. त्याच्याने आणि होत आहे. स्लाइड सर एकदा आपण स्टॉप शेअरिंग करून परत शेअर करून बघूया. Okay, madam, no issue. Yeah, I will do it. Is it visible now, madam? नाही सर ग्रीन कॅनव्हास दिसत आहे. एंटायर स्क्रीन शेअर करताय ना सर? हो हो. आता दिसतंय का मॅडम? ग्रीन बॅकग्राऊंड दिसतंय सर फक्त. पुन्हा एकदा. Now I think it's visible. येस सर याला मिनिमाइज करून पीपीटी आता ओपन कराल. Okay, no issue. आता दिसतंय मॅडम? नाही सर आम्हाला गुगल मीट सॉरी वेबएक्स ची स्क्रीन दिसते. आम्हा सर्वांची नावं दिसतात आहे. बरं आता माझी स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? नाही सर शेअरिंग करताना तुम्ही एंटायर स्क्रीनच शेअर करताय ना? हो हो. पुन्हा एकदा करू पण बघते मॅडम. नो इश्यू. हो कारण की आम्हाला वेबएक्स ची स्क्रीनच दिसते. अच्छा. Let me share once again. सर डेस्कटॉप दिसतंय आता. आता होईल आय मॅडम थिंक. आता विजिबल आहे का? हो सर आता स्लाइड शो करून बघाल सर. हा नाव इट्स फाईन सर. यू कॅन प्रोसीड. Okay, ma'am. Yeah. So friends, as we discussed, the first be the definition of cybercrime. Cybercrime is an unlawful act where a computer or communication device or network is used to commit or facilitate a crime. So in this case, categories of cybercrime can be classified in two ways. The first is the target of the crime, and second is whether the crime occurs as a single event or as a series of events. So in these circumstances, the target of the crime can be classified as crimes targeted at an individual level, sometimes crimes targeted at the property, sometimes crimes can be targeted at organization levels, a single event of cybercrime or the series of events. So the very first is here about the cybercrime against individual. Am I audible to all of you now? Yes sir, yes, clearly. Yes, sir. So my screen, now my screen is visible to all of you? Yes sir, yes. It is moving also. Okay. So the very first case is here, email spoofing. A spoof email is one of that appears to originate from one source but actually has been sent from another source. इस केस में क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल ईमेल जिस सेंडर के द्वारा आना चाहिए वहां से टारगेट न होते हुए किसी थर्ड पार्टी से हमारा जो मेल है वो किसी इंडिविजुअल को सेंड होगा. So that is the case of email spoofing. Spamming. In this case, people who create electronic spam are called spammers. Spam is the abuse of electronic messaging systems to send unsolicited bulk messages indiscriminately. Spamming is widely detested and has been the subject of legislation in many jurisdictions. For example, the Can Spam Act of 2003. So, as we seen in our Gmail account,
or in our Yahoo account also, we observed the spam emails. So search engine spamming. Spamming is alteration or creation of document with the intent to deceive an electronic catalog or a filing system. Some web authors use subversive techniques to ensure that their site appears more frequently or higher number in return search results. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर साइट को सर्व करते हैं और उस समय पर अगर हमने किसी रिजल्ट को सर्च किया तो उसमें मल्टीपल रिजल्ट हमें उसमें शो होते हैं. सो सपोज इट कुड बी possible only when if your engine will get spammed by the any hackers. The next type is here cyber defamation. Cyber defamation occurs when defamation takes place with the help of computers or the according to the IPC section of 499. It may amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of the person if living and is intended to be hurtful to the feelings of his family or other relatives. जैसे कि हम लोग मोस्टली ये जो एग्जांपल है साइबर फेसबुक में ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का किसी पर्सन से अगर रिलेशनशिप खराब हो गया या उसके सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हो गए तो वो पर्टिकुलर पर्सन को सोशल लेवल पे डिफेम करने की कोशिश करता है. So in that situation, we have or it may amount to defamation to make an imputation concerning a company or an association or collection of persons as such. कभी कभी ये जो डिफेमेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में हो सकता है या कभी किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में भी हो सकता है. एंड imputation in the form of alternatives or express ironically may amount of to defamation. No imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation is directly or indirectly in the estimation of others lowers the moral or intellectual characters of that person or lowers the characters of that person in respect of his caste or his calling or lowers the credit of that person or causes it to be believed that the body of that person is in the loathsome state or in a state generally considered as a disgraceful. तो जैसे हमने इसके कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि सोशल मीडिया में कई बार जो डिफेमेशन के केस ऑब्जर्व होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि दो पर्सन पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं फिर उनकी रिलेशनशिप खराब होती है या किसी दो फर्म के बारे में अगर कोई डील हो रही है अगर उनकी बिजनेस डील अगर ब्रेकअप हो जाती है या किसी दो पर्सनैलिटी के रिलेशनशिप खराब होते हैं और ऐसे केस में अगर एक पर्सन अगर सेंटिमेंटली अगर हर्ट हो जाता है तो वो दूसरे पर्सन को सोशली डिफेम करने की कोशिश करता है. तो इस केसेस में कई बार ऐसा होता है कि वो उसको सोशली डिफेम करने के लिए कई सारे अलग अलग टैक्टिक्स यूज करता है या कई बार पर्टिकुलर पर्सन का इमेज या फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में या उसके वीडियोस डिफेम करने के लिए मॉर्फिंग करके उसको स्प्रेड आउट करता है. The law of defamation attempts to create a workable balance between two equally important human rights. The first is the right to an unimpaired reputation. The second is the right to freedom of expression. Internet time theft. This is another case. Internet time theft occurs when an unauthorized person uses the internet hours paid for another person. It comes under hacking because the person gets access to someone else's ISP, user ID and passwords either by hacking or by gaining access to it by illegal means. जैसे कि ये जो एग्जांपल है इंटरनेट टाइम थेफ्ट, इसके लिए जो हैकर्स हैं ये क्या करते हैं जनरली अगर आपके मशीन का या मोबाइल का अगर किसी को एक्सेस मिल गया तो उसके लिए हमारे सिस्टम के अंदर की लॉगर या वेब लॉगर नाम के जो टूल्स है उसको इंस्टॉल करते हैं अननोइंगली और जिसके थ्रू हमारे सिस्टम के पासवर्ड्स या उसके जो बाकी पिन है वो इजीली वो
ट्रेस आउट कर सकते हैं और हमारा जो अकाउंट है अननोइंगली कोई थर्ड पर्सन उसको एक्टिवेट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है और हमारे अकाउंट के थ्रू हमारे फ्रेंड्स को या हमारे रिलेटिव्स को रॉन्ग मैसेज फीड आउट कर सकता है या कभी कभी फाइनेंशियल डिमांड भी करवा सकता है. सो दैट इज द केस ऑफ इंटरनेट टाइम थेफ्ट. Another type is here salami attack or salami techniques. These attacks are used for committing financial crimes. In most of the situations we can observe the financial crimes can be uh, monitored or can be worked out with the help of salami attacks or salami techniques. In this case, no account holder will probably notice this unauthorized debit, but the bank employees will make a sizable amount every month. जैसे कि हमारे जो बैंक में अकाउंट्स होते हैं, ऐसे केस में मैक्सिमम जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं वही इस प्रकार का टेक्निक यूज करते हैं फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स. जैसे हमारे हर एक के अकाउंट में से मंथली 5 रुपीज या 2 रुपीज अगर डिडक्ट हो गए तो जनरली हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते या हम उसको उतना केयरफुली उसका प्रिकॉशन नहीं लेते. तो हमें लगता है कि नहीं बैंक के कुछ टैक्सेस होंगे, उसके लिए हमारे अमाउंट से ये इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया. लेकिन बैंक में मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स होते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक बैंक में 500 या 1000 अकाउंट होल्डर्स हैं और पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पर डे या वीकली या मान लीजिए मंथली अगर कुछ मिनिमम अमाउंट अगर डिडक्ट हो जाती है तो इस प्रकार से जो बेनिफिशियरीज है वो काफी सारा उसमें सर फाइनेंशियल आपका फ्रॉड कर स्क्रीन सकता है. शेयरिंग स्टॉप हुआ है. स्टॉप हो गया मैडम? यस. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. Now is it visible, ma'am? हा सर याला मिनिमाइज कराल या पूर्ण स्क्रीनला. आता दिसते का मॅडम? हा हा सर आता विजिबल. स्लाइड शो कराल सर. Okay. हा ठीक So है this is सर. an example of okay. So this is an example of salami technique. Another method is here data diddling. A data diddling attacks involves altering raw data just before it is processed by a computer and then changing it back after the processing is completed. Electricity boards in India have been victims to data diddling program inserted when private parties computerized their system. So that is one of the case of data diddling. Hacking. Hackers or crackers or the crackers are some of the oft-heard terms. The original meaning of the word hack means an elegant, witty or inspired way of doing almost anything originated at MIT. जनरली हैकर्स क्या करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल जो एसेट्स है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या कभी इंटेंशनली किसी पर्सन को डिफेम करने के लिए या उसको ब्लैकमेल करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं. Hackers write or use ready-made computer programs to attack the target computer. They possess the desire to distract and they get enjoyment out of such. Some hackers hack for personal monetary gains, such as stealing the credit card information and transferring money from bank accounts to their own account, followed by withdrawal of money. Online frauds. So, types of crimes under the category of hacking, like spoofing website and email security alerts, hoax, mail about virus threats, lottery frauds, and spoofing. These are the different techniques. In spoofing websites and email security threats, fraudsters create authentic looking websites that are actually nothing but a spoof. जैसे मान लीजिए कि हमारा पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है RBI या SBI,
तो ऐसे जो बैंक है या ऐसी कोई जो ऑथेंटिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये फेक वेब लिंक क्रिएट करते हैं या उनकी फेक वेबसाइट जनरेट करते हैं, एंड इट इज जस्ट लुक लाइक अ सेम विद द ओरिजिनल वन. The purpose of these websites is to make the user enter personal information, which is then used to access businesses and the bank accounts. कई बार हमको जैसे बैंक से मैसेज आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड लैप्स हो गया, आपको केवाईसी करना है, तो जनरली बैंक कभी भी हमको फोन नहीं करती है, and they never send you the personally message. So this kind of online fraud is common in banking and financial sector. It is strongly recommended not to input any sensitive information that might help criminals to gain access to sensitive information such as our bank account details, even if the page appears legitimate. तो कभी भी हमारी जो बैंक डिटेल्स हैं किसी भी ऐसे स्पूफिंग वेबसाइट्स के रिलीवेंट इसमें हमने हमारा डेटा फीड नहीं करना चाहिए, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स में शेयर नहीं करनी चाहिए. Am I audible to all of you? Yes, Hello? yes, sir. Okay. So another type is there, computer sabotage. It is the use of the internet to hinder the normal functioning of a computer system through the introduction of worms, viruses, or logic bombs. It can be used to gain economic advantage over a competitor, to promote the illegal activities of terrorists, or to steal the data or programs for extortion purposes. Logic bombs are event-dependent programs created to do something only when a certain event, known as a trigger event, occurs. ये जनरली जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो इसका मोस्टली ज़्यादातर यूज करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइट को हैक करने के लिए, उसको ब्रेकआउट करने के लिए. Some viruses may be termed as a logic bombs, email bombing, or mail bombs. It refers to sending a large number of emails to the victim to crash victim's email account, or sometimes victim's mail server crash in the case of company or an email service provider. कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी, एक 2 साल पहले था कि हमारे आईआईटी इंस्टीट्यूट में उसके साइट को हैक किया गया था और उसके सर्वर को ब्रेक करने की कोशिश की गई थी. That was the case of that case was done by the hackers from Pakistan. Usenet newsgroups as the source of cybercrime. So Usenet is a popular means of sharing and distributing information on the web with respect to the specific topic or subject. It is a mechanism that allows sharing information in many manners. The newsgroups are spread across 30,000 different topics. Another example is a forgery. Forgery, counterfeit currency notes, postage, revenue stamps, mark sheets, etc. use sophisticated computers, printers, and scanners. Webjacking. Webjacking occurs when someone forcefully takes controls of your website or the concerned websites by cracking the passwords and later changing it. This is called as a webjacking. यानी जब भी कोई फोर्सफुली हमारे वेबसाइट का एक्सेस कैप्चर कर लेता है और फिर वो इंटेंशनली उसके पासवर्ड्स नोन होने के बाद में हमारे वेबसाइट्स में मल्टीपल या मिसलीड करने वाले चेंजेस कर सकता है. दैट इज एग्जांपल ऑफ वेबजैकिंग. News groups farm or crimes emanating from Usenet news groups. The advent of Google groups and its large Usenet archives has made Usenet more attractive to spammers than ever. Spamming of Usenet news groups actually predates email spam. जैसे न्यूज चैनल्स के लिए भी कई सारे ऐसे न्यूज ग्रुप्स होते हैं जिसमें भी इस प्रकार के रॉन्ग मैसेज या रॉन्ग सोशल लेवल पे डिफेम करने के लिए रॉन्ग कम्युनिकेशन किया जाता है वाया ईमेल स्पैम. इंडस्ट्रियल स्पाइंग और इंडस्ट्रियल एपिसोनेज, ये जनरली हमने काफी केसेस में ऑब्जर्व किया कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनका डेटा हैक करने के लिए या उनके प्रोजेक्ट को लीक करने के लिए इस प्रकार की टैक्टिक्स यूज की जाती है. दैट इज वी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल स्पाइंग. Spies can get information about the product finances, research and development, and the market strategies
an activity known as a industrial spying. जनरली इस प्रकार का जो प्रैक्टिसेस है ये कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के लिए भी यूज करता है. जैसे कि अभी हम लोग एक सिंपल केस स्टडी देख सकते हैं, सिंपल एग्जांपल ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर और इजराइल एंड हमास वॉर. इन दैट situations the people used to try to know the internal defense details of the concerned country. Targeted attacks applies very well to organizations that are victim of focus attacks aiming at stealing corporate data, intellectual property, or whatever else that may yield a competitive advantage for a rival company. So these kind of tactics can be used by the particular rival company for the any another organization or for the any other industry. There are two distinct business models for cybercrime applied to industrial spying. One is a selling Trojanware and second is selling stolen intellectual property. So two types of attacks are prevalent in cybercrime mostly. The one we call as a technocrime and the another is called as a techno vandalism. तो जनरली जो साइबर अटैकर्स होते हैं ये इस दो प्रकार के कैटेगरीज में साइबर अटैक्स परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज अ प्रीमीडिएटेड एक्ट अगेंस्ट द सिस्टम और systems with the intent to copy or to steal the information or prevent the access or to corrupt or damage the data of the particular company or the particular organization. Otherwise, deface or damage parts of the complete computer system. So this kind of example we call as a technocrime. Another one is called as a techno vandalism. These acts of brainless defacement of websites and or the other activities such as copying files or publicizing their contents publicly are usually opportunistic in nature. जनरली ये भी हमने कई बार देखा है कि टेक्नो वैंडलिज्म में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट्स को ब्रेकआउट करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज या इस प्रकार के माल प्रैक्टिसेस यूज किए जाते हैं. साइबर क्राइम्स डिफर फ्रॉम मोस्ट टेरिटोरियल क्राइम्स इन 4 ways. The very first is here, how to commit them is easier to learn. Second, they require few resources relative to the potential damage caused. Third, they can be committed in a jurisdiction without being physically present in it. And the fourth, they are often not clearly illegal. तो जनरली जो साइबर क्राइम्स अलग अलग जैसे अपनी कंट्री में बोलिए या अदर कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकली अलग अलग कंट्रीज में भी साइबर क्राइम्स के इंसिडेंट्स होते रहते हैं. मोस्टली ये इन 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए जाते हैं. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज हियर साइबर टेररिज्म. सो इट इज डिफाइंड एज any person or the group or organizations who with terrorist intent utilizes access or aids in accessing a computer or a computer network or electronic systems or electronic device by any available means and thereby knowingly engages in or attempts to engage in a terrorist act commits. So this is one of the example of cyber terrorism. Now we will discuss how cybercrimes are planned and how they actually take place. अब जनरली जो साइबर क्राइम्स होते हैं इसके लिए टेररिस्ट किस प्रकार का प्लानिंग करते हैं, किस प्रकार का मैकेनिज्म ये यूटिलाइज करते हैं. समटाइम्स इट कुड बी हैपेंड बाय द हैकर्स और इट कुड बी controlled by the terrorist group also. The very first, cyber terrorists usually use a computer as a tool and they target or both for their unlawful act to gain the information. हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कई सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो सोशल इन्वायरमेंट को या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ब्रेक करने के लिए कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स करते रहते हैं जिसमें कभी कभी किसी कंट्री के सर्वर को या इसका डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का उसका जो भी सर्वर होगा उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या कभी कभी स्पाई एजेंट के थ्रू भी ये सारे प्रैक्टिस ये लोग यूज करते हैं. अनदर वन, इंटरनेट इज वन ऑफ द मीन्स बाय विच द ऑफेंडर्स कैन गेन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ
companies or the firms, individuals, sometimes banks, and can lead to intellectual property, selling illegal articles, and mostly all over the worldwide. We observe that there might be the cases of pornography, child pornography, etc. This is done using all these techniques, just like phishing, spoofing, farming, internet phishing, wire transfer. And nowadays, it has been observed that some terrorist group can also use the case of human trafficking also with the help of cyber terrorism. So how criminals plan the attack? Am I audible to all of you, friends? Hello? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this is a very important topic. Now we are going to discuss how the criminals plan for the any kind of attack. The very first, reconnaissance, information gathering. In this case, first of all, what they do, they just proceed the recce of the concerned institute or the organization or the person. This is the first phase and is treated as a passive attack. इस केस में ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन होगा या ग्रुप होगा, उसकी पहले पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. सेकंड, they proceed with the scanning and scrutinizing the gathered information for the validity of the information as well as to identify the existing vulnerabilities of the system. And the third one, launching an attack. So in this case, gaining and maintaining the system access. So this is the prior mode they have to follow. In reconnaissance, so it is an act of reconnoitering, explore, often with the goal of finding something or somebody, especially to gain information about an enemy or enemy country or potential enemy also. So these kind of tactics can be used by some enemy countries also, or by some terrorist groups also. Or sometimes these kind of tactics can be used by the hackers to identify or to target some individual person or the particular company or the firm also. In reconnaissance begins with the footprinting. This is the preparation towards pre-attack phase. It involves accumulating data about the target environment and computer architecture to find ways to intrude into the environment. So this is the first case of passive attack. In the second case, a passive attack involves gathering information about target without his or individual's or company's knowledge. It is usually done using internet searches or by Googling an individual or a company to gain the information. Second type is here active attacks. An active attack involves probing the network to discover individual hosts to confirm the information gathered in the passive attack phase. It involves the rise of detection and is also called rattling the door knobs or active reconnaissance. Active reconnaissance can provide confirmation to an attacker about security measures in place. तो एक्टिव अटैक्स में क्या होता है जनरली, कि जनरली नेटवर्क्स के थ्रू मॉनिटर किए जाते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की या सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं. इन द सेकंड फेज they plan scanning and scrutinizing the gathered information. For that purpose, they have to follow the basic objectives. The very first, port scanning. Port scanning में क्या होता है? They try to identify or open the ports and the services of the concerned system or the server. Or sometimes they try to attempt to close the ports and services also. Second is here, network scanning. In this case, initially they try to understand the IP addresses and related information about the computer network systems. And in third, vulnerability scanning.
they try to understand the existing weakness of the concerned system. And after knowing the weaknesses of the concerned system, then they try to hit the different tactics. And through that, they proceed with the active attacks. Now, in the attacks, it is a gaining and maintaining the system access. In this case, after scanning and enumeration of the concerned systems, the attack is launched using the following steps. यानी जनरली अटैकर्स ये टैक्टिक्स यूज करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, they try to crack the passwords of the concerned user system or the server system. Second, exploit the privileges. Third, execute the malicious command and applications. फिर ये क्या करेंगे, या तो malicious commands spread out करेंगे सिस्टम के थ्रू, या कुछ applications या patch files उसमें spread out करेंगे. Then hide the files if they require, and then cover the tracks. And later on, they try to attempt to collect all the information or the privacy of the particular system server. Sometimes they try to attempt to delete the access logs so that there is no trail illicit activity. तो इस प्रकार की टैक्टिक्स जनरली अटैक्स में हैकर्स यूज करते हैं. Another topic is here social engineering. In this case, it is a technique to influence and persuasion to deceive people to obtain the information or perform some action. Social engineer exploits the natural tendency of a person to trust social engineers' word rather than exploiting computer security holes. In social engineering, it involves gaining sensitive information or unauthorized access privileges by building inappropriate trust relationship with insider. The sign of truly successful social engineers is that they receive information without any suspicion. So classification of social engineering is here. Human-based social engineering, and sometimes another one is computer-based social engineering. In human-based social engineering, it refers to person-to-person interaction to get the required or desired information. इस केस में क्या होता है कि जनरली पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की डिटेल इंफॉर्मेशन ट्रेस आउट करने की कोशिश करता है. सेकेंडली, it is based on the computer-based social engineering. In this case, computer-based social engineering refers to an attempt made to get the required or the desired information by using the computer softwares or via internet. So that is another techniques can be followed by the hackers. Another important type is here cyber stalking. It is defined as the use of information and communication technology, particularly the internet, by an individual or a group of individuals to harass another individual person, or sometimes to harass group of individuals, or sometimes to harass the organizational level. In cyber stalking, mostly the hackers can they can deal all these tactics with the help of internet or via with some electronic communication device to stalk another persons. It involves harassing or threatening behavior that an individual will conduct repeatedly. As the internet has become an integral part of our personal and professional lives, cyber stalkers take advantage of ease of communication and an increased access to personal information available with a few mouse clicks or keystrokes. तो जनरली हम देखते हैं कि साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग में आजकल मैक्सिमम क्राइम जो हो रहे हैं उसमें ज्यादातर हैकर्स इन्हीं दो टैक्टिक्स का ज्यादातर यूज करते हैं. We'll discuss the detailed case studies in further. Types of stalkers. There are primarily two types of stalkers as listed. The first one, online stalkers, and the other one is offline stalkers. They aim to start the interaction with the victim directly with the help of internet. This is an example of online stalkers. Offline stalkers,
In this case, the stackers may begin the attack using traditional methods such as following the victim or by watching the daily routine of the victims. We take an example of card swapping on a ATM machine, or this is an example of offline stackers. How cyber stacking works. Personal information gathering about the victim. Second, establish a contact with victim through telephone, cell phones. Once the contact is established, the stackers may make calls to the victim to threaten or to harass the particular person. Stalkers will almost always establish a contact with the victims through email. The stalkers may use multiple names while contacting the victims. Some stalkers keep on sending repeated emails asking for various kinds of favors or threatens the victims. The stalkers may post the victim's personal information on any websites related to illicit services such as sex worker services or dating services, or posing as if the victim has posted the information and invite the people to call the victim on the given contact details. The stalkers will use bad and offensive or attractive language to invite the interested persons. Whosoever comes across the information start calling the victim on the given contact details, asking for sexual services or relationships, or sometimes stalkers can torture the persons to join some terrorist group also. Some stalkers subscribe register the email account of the victims to innumerable pornographic images or with the sites, because of which the victim will start receiving such kind of unsolicited emails. Or sometimes they continuously send the images or the videos from this particular. Am I audible to all of you? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. There is another case study of cyber stackings. Those who are having accounts on social media, sometimes nowadays what happens, the hackers will hack our social media account. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी हैक किया जाता है, जिसमें कई सारे पोर्नोग्राफिक या रॉन्ग एब्यूसिव इमेजेस हमारे अकाउंट्स के थ्रू हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स को सर्कुलेट होते हैं, या हमारे फोटोज को या हमारे वीडियोस को भी मार्क करके उसको सर्कुलेट किया जाता है. So that is another case of cyber stalking via social media account. Another case is cyber cafe and cyber crimes. Cyber crimes such as stealing of bank passwords and subsequent fraudulent withdrawal of money have also happened through the cyber cafes. Cyber cafes have also been used regularly for sending obscene mails to harass the people. आजकल इसका एक स्मार्ट एक मैकेनिज्म आया है जिसमें डिजिटल अरेस्ट एक यूज होता है और एक एआई का भी इसमें यूज होता है. We'll discuss this case study in further in the another session in types of frauds. Indian Information Technology Act ITA 2000 interprets cyber thefts as a network service providers referred to under the arrest bill section 79, which imposed on them a responsibility for due diligence, failing which they would be liable for the offences committed in their network. So mostly cyber criminals can either install malicious programs such as keyloggers, there is another one that is the web loggers or spyware, or launch an attack on the target machine or the target system. Here are few tips for safety and security while using the computer in cybercafe. Whenever we have to use any other person's device or the systems, we have to follow some precautionary measures. जब भी हम किसी और का सिस्टम यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, so first of all you have to always log out from the system, stay with the computer, let us clear the history and temporary files from the another systems, and be alert. Avoid online financial transactions. Mostly let us have a habit to change the passwords. Let it be most of the times you have to use the virtual keyboards, and
be careful about the security warnings. The another type of cybercrime is here botnets, which has we are already earlier discussed in the first session. So a botnet, also called as a zombie network, is a network of computers infected with a malicious programs that allows cybercriminals to control the infected machines remotely without the user's knowledge. Your computer systems may be a part of botnet even through it appears to be operating normally. So botnets are often used to conduct a range of activities from distributing spam and viruses to conducting denial of service attacks. तो जो DOS या DDoS टाइप के जो अटैक्स होते हैं उसमें जनरली बॉटनेट्स यूज किया जाता है. So one can ensure following to secure the system. Let us have to use the antivirus, anti-spyware softwares and keep it updated always. You have to set the OS download and install security patches automatically. Use firewalls to protect the system from hacking attacks. Disconnect from the internet when you are away from the computer. Downloading the freeware only from the websites that are known and trustworthy. Check regularly the folders in the mailbox, sent items or outgoing for those messages you did not send. So this is one of the important habits we have to follow. Let us check of your email accounts and let us check the sent items in your mailbox so that you can check whether your account will be hacked or not. Another, take an immediate action if your system is infected. Another topic is here, attack vector. An attack vector is a path or means by which an attacker can gain access to a computer or to a network server to deliver a payload or malicious outcome. जनरली अटैक वेक्टर का यूज सर्वर को ब्रेक करने के लिए किया जाता है. अटैक वेक्टर्स इंक्लूड वायरसेस, ईमेल अटैचमेंट, वेब पेजेस, पॉपअप विंडोज, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट रूम्स एंड डिसेप्शंस. The most common malicious payloads are viruses, Trojan horse, worms, and spyware. If an attack vector is thought of as a guided missile, its payload can be compared to the variant in the tip of the missile. Payload means the malicious activity that the attack performs, and the second one, it is the bits that gets delivered to the end user at your destination. So in attack vectors, how they can launch, let us discuss that procedure. First of all, they have to attack by email, then attachment and the other files, sometimes attack by deception via hackers, headless guest, attack by web page, attack of the worms, malicious macros, or spyware, sneakware, and the viruses. Now, sometimes nowadays we observe the cyber crimes could be happen in the cloud computing environment also. In cloud computing services, while offering considerable benefits and cost saving makes it easier for cyber criminals to attack the system. Cloud computing is the internet-based development and use of computer technology. A cloud service has three distinct characteristics which differentiate it from traditional hosting. क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्चुअल स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं और कई बार जैसे कि हमारे जीमेल अकाउंट में गूगल ड्राइव होता है. दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. हमारे गूगल ड्राइव में हम हमारी कई सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं एंड वी कैन यूज दैट at anywhere, any places. So it is sold on demand. It is elastic in terms of usage, and the service is fully managed by the provider. So
सर आवाज नहीं आ रही है। बाकी पार्टिसिपेंट्स आपको आ यस रहा है मैम, क्या नहीं आ आवाज? रही, नहीं आ रही No, आवाज। even screen is ठीक not है, visible. वेट, कुछ टेक्निकल इशू होगा, प्लीज वेट। Hello, am I audible now, madam? हाँ सर, Yes, आता sir. है तो आवाज। Hello. Okay. यस Yes, sir. सर, Yes, यस, sir. नाउ यू Yes, आर sir. ऑडिबल। Yeah. सर स्क्रीन शेअर करावं लागेल। एक मिनिट मॅडम, just हा नेटवर्क डिस्कनेक्ट झालं इकडे. हो सर। Is it visible now, ma'am? Yes sir, yes, now it is visible. Please continue, sir. Okay. So friends, now we are going to discuss the major types of cybercrime: hacking, phishing, identity theft, malware attacks. So in hacking, one can try to steal, alter or destroy the data of our system. Sometimes unauthorized access to computer system for network. And phishing. Hello. Am I audible to all of you? Yes, yes. Phishing, fake emails, messages, or website tricks user into revealing personal information. Commonly target passwords, credit card numbers, and bank details. मोस्टली जैसे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या हमारे मोबाइल पे मैसेज आते हैं अलग अलग ऑफर्स के, ये जो केसेस होती है फिशिंग की केसेस होती है. आइडेंटिटी थेफ्ट, criminals steal personal data to impersonate someone else, used for financial frauds, accessing services, or committing other crimes. Malware attack, it includes viruses, worms, trojans, spyware, and ransomware designed to damage the system, stealing the data, or hold file hostages also. साइबर स्टैकिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट, ये भी हमने अभी देखा. साइबर स्टैकिंग का एग्जांपल: persistent targeting of individuals through digital platforms, include threats, blackmail, or emotional abuse. Financial fraud, online scams involve fake transaction, investment fraud, credit card theft, often carried out through fake websites or apps.
Denial of service attacks, overload a system or network to make unavailable to users, can cripple websites, apps, or entire servers. Cyber terrorism, attacks on critical infrastructure or system to cause panic or disruption. Often politically or ideologically motivated. Software piracy, unauthorized copying, distribution, or use of software violates intellectual property rights. And the last one, child exploitation and abuse. Sharing or accessing illegal content involving minors, one of the most serious and heavily prosecuted cybercrime. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. So, what are the causes of cybercrime? Mostly nowadays, the youngsters have some different kind of passions. It is a passion of youngsters, desire of making quick money, capacity to store data in comparatively small spaces, confidential information is online, negligence of the particular person or a group, lack of evidences, and easy to access. So, in passion of youngsters, cybercrimes can be committed for the sake of recognition. This is basically committed by the youngsters who want to be noticed and feeling among the group of big and strong guys in the society. That is one of the reasons. Second, desire of making quick money. Another cause of cybercrime is to make quick money. This group is greed motivated and is career criminals who tamper with data on the net or system, especially e-commerce and e-banking. Next, capacity to store data in comparatively small spaces. The computer has unique characteristics of storing data in a very small spaces much easily. That is why it is another cause of cybercrime. And sometimes this is one of the big reasons, as we observed, confidential information is online available. So in this case, confidential data from security firms, scientific databases, financial institutes, and even governmental organizations is stored online and on networks. This allows cyber criminals to initiate unauthorized access and use it for their own needs. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसे सिक्योरिटी प्रोविजंस के लिए जो मैकेनिज्म्स है ये अभी ग्रोइंग स्टेट में है. हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स अभी भी अवेलेबल नहीं है. दैट इज व्हाई द पीपल्स फेस these kind of cybercrime offenses. Now the question is, who are the cyber criminals? So cyber criminals are a group who use technology to commit illegal activities. And what is the motivation behind these people? Mostly they want to earn financial gains. Sometimes there might be a political agendas or personal revenge or thrill seeking. So the characteristics of cyber criminals are highly skilled in technology, often anonymous or use fake identities, operate globally and remotely, and may work alone or in organized group. So types of cyber criminals. Am I audible to all of you? Hello? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So the types of criminals are there. Very first is children and youngsters between the age group of 16 to 18. Nowadays, there is a one big case study. There is a one village known as Jamtara. In this village, यहाँ पर 14 से 15 साल या 18 साल के बच्चों को स्पेशली ट्रेनिंग दिया गया है जो कंटिन्यूसली हैकिंग का काम करते हैं. स्ट्रक्चर्ड हैकर्स, एक्सपर्ट हैकर्स एंड dissatisfied employees. These are the possibly types of cyber criminals. So some safety tips we have to follow, as some of these are we had already discussed in the previous lecture. We have to use antivirus softwares, insert firewalls, uninstall unnecessary softwares, maintain backup, check security setting, and stay anonymous. Choose a genderless screen name. Never give your complete name or address to any unknown person or the strangers.
Don't respond to harassing or negative messages like frames. Get out of uncomfortable situations quickly, or sometimes if you find any of these groups are there, so immediately you have to leave that group. Save offending messages. More about internet privacy. So what are the advantages of cybersecurity? The cybersecurity will defend us from critical attacks. It helps us to browse the safe website, internet security process, all the incoming and outgoing data on our computer. Security will defend from hacks and virus. The application of cybersecurity used in our PC needs update every week. The security developers will update their database every week once. Hence, the new virus also deleted. Always use latest and update antivirus software. Never send your credit card number to any site that is not secure, and always keep backup value so that one may not suffer the data loss. So let me conclude. Technology is the destructive only in the hands of people who do not realize that they are one and the same process as the universe. So friends, technology is just like a fish. The longer it stays on the shelf, the less desirable it becomes. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just hold down. I want to show you one video relevant with the same. Hmm. सर वॉल्यूम बढ़ाइए सर. Is it audible and visible to all of you? Yes, sir. Yes. Hello. आवाज नहीं आ रही. Yeah. Visible but not audible. Let me Visible, play but from start once again. audibility is very low, sir. सर व्हॉइस थोडा वाढवता येईल तर बघाल. Hello. सर व्हॉइस हा, मॅडम, वाढवता बोला. येईल का? व्हिडिओचा हो, आवाज हो, हो. वाढवता येईल का? चालेल चालेल. हो हो हो. 1 minute. के समय राजेश नाम एक दिन नागपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में शाम के समय राजेश नाम का एक युवक मोबाइल हाथ में लेकर बैठा था. ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर एक मैसेज आया, सिर्फ आज के लिए डिस्काउंट. बिना सोचे समझे उसने उस लिंक पर क्लिक कर दिया. उसने कार्ड की डिटेल भरी और कुछ ही पलों में उसके अकाउंट से 25,000 रुपए गायब हो गए. राजेश घबरा गया. दिल में एक ही सवाल, अब क्या करूं? वो बैंक को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया पुलिस विभाग ने एक नंबर बताया था, 1930. उसने तुरंत कॉल किया. नमस्कार, ये अकाउंट से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है. कॉल पर मौजूद अधिकारी ने सारी जानकारी दी और ट्रांजैक्शन रोकने की प्रक्रिया शुरू की. सिर्फ 15 मिनट में उसकी बैंक को अलर्ट भेजा गया और पैसों का ट्रांसफर रोकने में सफलता मिली. राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एक और नंबर याद आया, 1945. ये नंबर था महाराष्ट्र सरकार की महासाइबर हेल्पलाइन का. उसने वहां भी कॉल किया और महाराष्ट्र साइबर सेल ने स्थानीय पुलिस से संपर्क करके केस दर्ज कर लिया. 2 नंबर, लेकिन दोनों ने मिलकर राजेश की मदद की. 1930 ने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक धोखाधड़ी रोकी और 1945 ने राज्य स्तर पर पुलिस सहायता दिलाई. Hello. Hello. Yes, sir.
बोला सर। आपने सभी ने ये वीडियो देखा? हेलो। Yes, sir. जी सर, Yes, sir. देखा। So what is your conclusion from this now? Anybody can comment? If you have noticed, immediately contact कांटेक्ट करना है one. सर में। यस यस यस। और क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे इंसिडेंट अगर हमारे साथ या हमारे किसी फ्रेंड के साथ हो जाए तो? ऐसे जाल में नहीं फंसना, लिंक वगैरह क्लिक नहीं करना। करेक्ट। एनी अदर कमेंट? सर एक क्वेश्चन था मेरा। यस सर, यस प्लीज। सर सलामी अटैक मुझे समझ में नहीं आया था, मैं जब भी देख रहा था पूछूंगा बोल रहा था, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था सर उसमें। अच्छा अच्छा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ। उस समय हमारा डिस्कनेक्शन हो गया था। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। हेलो। हाँ सर। Yes, so these attacks are used for committing financial crimes mostly. So sometimes no account holder will probably notice this unauthorized debit, but the bank employees will make a sizable amount every month. जैसे कि क्या होता है सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं जेके हेलो। महाविद्यालय का औराबाद से हूँ सर, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा, यानी आप गोंदिया डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं ना? जी सर। जैसे मान लीजिए सर, आपका गोंदिया के बैंक में अकाउंट है ना? मान लीजिए कि एसबीआई में आपका अकाउंट होगा पॉसिबली, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में होगा। जी सर। ये सब नो, फॉर एग्जाम्पल। हाँ सर। अब जनरली क्या होता है सर, हमारे अकाउंट से कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पर्टिकुलर बैंक का कोई एम्प्लॉई अगर इसमें इन्वॉल्व है, हैकिंग के इसमें, या उसको कुछ फ्रॉडस्टर करना है फाइनेंशियली, तो वो क्या करेगा, हमारे सभी जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे बैंक के, उनके अकाउंट से मंथली मिनिमम 2 रुपीज या 5 रुपीज डेबिट करेगा, यानी डिडक्ट हो जाएगा। अब जनरली क्या होता है, कई बार हम लोग इसको अननोटिस कर देते हैं कि चलो भाई ये कुछ टैक्सेशन का सर होगा, आपकी वॉइस या ब्रेक हो रही है सर। ओके ओके, या कई बार हम लोग अलग अलग सर्विसेज जो यूज करते हैं बैंक के, उससे रिलीवेंट ये डिडक्शन हो सकता है, ऐसा हम समझते हैं। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ एक सर। मिनट में वीडियो क्लोज कर देता हूँ। नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर। Yes. ओके। तो सर जनरली ऐसा होता है कि जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, अब जो बैंक में एम्प्लॉई है वो जनरली क्या करते हैं, अगर उसको फ्रॉड करना है तो हमारे जितने भी अकाउंट होल्डर है सभी के अकाउंट से मिनिमम मंथली 2 रुपये या 3 रुपये या 5 रुपये मान लीजिए, वो डिडक्ट करवाएगा। अब हम लोग ये सारे छोटे से अमाउंट को अननोटिस कर देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि उस बैंक में मिनिमम 500 या 1000 नंबर ऑफ अगर कस्टमर्स है, तो ऐसे पर पर्सन मंथली वो कितने सारा अमाउंट वो डिडक्ट कर सकता है। ये जो एग्जांपल है ये हमारा इसका एग्जांपल। अभी समझ में आया सर आपको? हाँ हाँ हाँ, यानी मिनिमम मिनिमम रुपीज जो डिडक्ट कर रहा है उसमें आप लोग समझ में नहीं आता। जी जी जी, हाँ जी हाँ। हाँ सर। तो सलामी अटैक में जनरली क्या होता है सर कि ये जनरली जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसी का नोन पर्सन हो सकता है, यानी पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वही अगर फाइनेंशियली उसके माइंड में अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमने कुछ तो भी इस प्रकार का फ्रॉड करना है, तो जनरली ये लोग ये टैक्टिक्स यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। कई बार हैकर्स भी इस प्रकार की ट्रैप यूज करते हैं बिटकॉइन के थ्रू, आजकल जो होता है ऑनलाइन में, है ना? जैसे हम लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, या जैसे ऑनलाइन बेटिंग जो अभी हम लोग करते थे, अभी पिछले 2-3 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर बैन कर दिया, तो उसमें भी कई प्रकार से इस प्रकार की टैक्टिक्स यूज की जाती थी। सो दैट इज द एग्जाम्पल। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन। सर, हाँ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर। यस, वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम माय साइड। या या ये जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ क्रिप्टो माइनिंग होती है या करेंसी माइनिंग, आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड, तो ये जो माइनिंग किया जाता है वो क्राइम है या लीगल है सर? मैडम इसमें अभी ऐसा है कि अगर पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो पर्टिकुलर फर्म है, अगर तो लीगल थॉट्स के लिए अगर यूज कर रहे हैं देन दैट इज ओके।
लेकिन जनरली अभी ऐसा हो रहा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हैकिंग्स करते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का यूज करके, जैसे हमें पता चलता है कि कई बार हमारे किसी के अकाउंट से पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट हो गया। आप जब क्राइम उसके लिए हम लोग साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, और जब उसका ट्रेसिंग होता है तो हमें पता चलता है कि वो अकाउंट या किसी विलेज पर्सन का था या किसी फार्मर का था। लेकिन जब पुलिस क्या करती है, उसको ट्रैप करती है, उसको पकड़ती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हैकर्स ने क्या किया इंटरनेशनल लेवल पर, कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट का यूज करके वो मनी ऑलरेडी स्वैप या ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे अकाउंट में अब्रॉड द कंट्रीज। तो उस केस में क्रिप्टो करेंसी जो है उसका जो मनी है वो ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे अननोन अकाउंट में। तो ये डिपेंड करता है कि उसका मोटिव कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका यूज हो सकता है। इज दैट क्लियर मैडम? तो ओके सर, बट इसका मतलब ऐसा मतलब मान सकते हैं कि ये जो पैसा जो ये लूटमार होती है ये विद इन कंट्री होती है या आउट ऑफ कंट्री भी होती है, मतलब भारत से मैडम बाहर आउट में ऑफ या कंट्री बाहर भी से होती है। भारत में? ऐसे कई सारे केस स्टडीज है मैडम जिसमें विद इन अ कंट्री भी हुए हैं और आउटसाइड द कंट्री भी हुए हैं, या ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड भी ऐसे कई सारे जो ट्रैपर्स है उन्होंने इस प्रकार के फ्रॉड किए हुए हैं। Due to timing, it is not possible for me to show that right now. But in second discussion, I will show you that kind of case studies. ओके तो सर, थँक यू सर. हेलो सर. Hello. हाँ सर, माझा एक प्रश्न आहे. मेरा एक क्वेश्चन है सर. Yes, sir. हाँ सर, अभी अभी NCPI ने अभी एक स्मार्ट स्पेक्टेकल करके नाम एक ऐप लॉन्च किया है. तो वो पहनने के बाद सिर्फ आपको बोलना है, बोलो और पैसे दो, उसके उसके सब पैसे निकल जाते हैं. तो ये कैसे के सेफ रहेगा? सर पार्डन सर, हेलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे, फिर से बोलिए सर. अभी आ रही सर आवाज? हेलो. हाँ हाँ बोलिए सर. हाँ, अभी अभी सर NCPI ने एक ऐप लॉन्च किया है सर, स्मार्ट स्पेक्टेकल्स करके. हेलो, आप सुन रहे हैं ना? क्या नाम बताया सर आपने? स्मार्ट स्मार्ट स्पेक्टेकल्स. हेलो. हेलो, हाँ आवाज आ आपकी रही है सर आवाज नहीं आ मेरी? रही सर, आवाज कट रही है आपकी. हाँ बोलिए सर. अभी आ रही सर आवाज? हाँ हाँ बोलिए. हाँ सर, अभी अभी NCPI ने अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है सर, उसको स्मार्ट स्पेक्टेकल बोलते हैं. अच्छा अच्छा. हाँ, तो उसमें सिर्फ आपको बोलो और पैसे पैसा बोलकर पैसे निकालना है. तो कहाँ तक सही है सर ये? सर आप पर्टिकुलर जो केस प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, फिलहाल इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर. मुझे पहले इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, तभी मैं इसके बारे में आपको कमेंट कर पाऊंगा. अभी अभी मैंने पढ़ा था न्यूज आप आर्टिकल, मैं ग्रुप पे भी शेयर करूंगा वो आर्टिकल. अच्छा, आप एक काम कीजिए, टेक्स्ट में मुझे मैसेज सेंड कीजिए, उसका पर्टिकुलर नेम बताइए, फिर मैं उसके बारे में आपको टाइटल बता दूँ. स्मार्ट स्मार्ट स्पेक्टेकल्स करके, स्मार्ट स्पेक्टेकल्स NCPI ने अभी लॉन्च किया है, करने वाला है. ओके ओके. फिलहाल मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर. सर, जी. So this is from my side. Once again, I Yes. am very much thankful to all of you for patient Yes. listening. And सर 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्यायचा. मॅडम हो, आपल्याला एक 10 मिनिटाचा ब्रेक लागेल. एक 12 हो वाजून सर, 5 ठीक. मिनिटांनी सुरू करू. चालेल सर, चालेल सर. प्रीती मॅडम, सो प्रीती मॅडम. येस, थँक्यू. हां बोला. ओके, थँक्यू मॅम. हाँ मॅडम, ते ग्रुपवर शेअर करू का मी ते स्मार्ट स्पेक्टेकलचे हो हो आर्टिकल? चालेल, मग मी सरांना पाठवते. ठीक है. हाँ, आज हाँ, न्यूज़पेपरला ठीक आलेलं आहे ते. हो 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 हो. ओके आप मॅम. ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं सर को वो फॉरवर्ड कर देती हूँ. ओके ओके. जी. सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं. 12:05 पे हम आगे का सेशन शुरू करेंगे. सर का ही नेक्स्ट सेशन है, तो आप 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक लीजिए. थैंक यू सो मच एवरीवन.